I have to clarify every time that this is my real name and I'm elder to him, so I'm the OG. I think kids back in India are much more street smart and their aspirations are at a different level already. Logic कौन समझाएगा बच्चों को? उनको ये बोलने का नहीं करने का कुछ ना कुछ हो जाता है इससे. बस भाई रिलीजन भी ऐसे ही चल रहा है दुनिया भर में. सबको ये बता देते हैं कि ये मत करो, इससे कुछ खराब हो जाएगा. बट हर एक चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, एक लॉजिकल रीजन होता है. बट अब इतना एक्सप्लेन कौन करे जाके यार. एंड इट ब्रेक्स माई हार्ट टू से दैट व्हेन आई लैंडेड एंड आई स्टेप्ड आउट ऑफ द एयरपोर्ट, आई कुड सी व्हाट पीपल कुड सी, which I couldn't see when I was living there. You know, the filth, the dirt, the untidiness, the chaos. 95,000 plus languages spoken in India. 95,000, are you sure? 600 million people in India do not have internet. It felt sad for him and I was like, हाँ होगा ऐसे, मेरे साथ भी यही हो रहा होगा. As you said, like if you're in the chaos, you can't see it. Hello. Welcome to Check. Point. That's the thing. I always set him up and he never gets it on like point because he always is doing that. Achha, anyway, today our guest is RJ Varun Dhawan. Dubai ka Varun Dhawan. Bro, I'm Dubai. Bro, you're setting Dubai ka Raghav. Nice to meet you. You're Dubai ka bro. You know, because of my name, the thing. That's the thing. But is it important to put Dubai ka samne? So I'll tell you, I was in Bombay one time. I was looking out for work. That's a part in my life, a little segment where I was hunting for work in Mumbai. And that time, till that time, Varun Dhawan is already there in the picture. No pun intended, really movies mein tha wo. So I went to meet this director during an audition. So they have this sheet where my name and everything is mentioned. It's like, your name is Varun Dhawan. I'm like, yeah. So he suggested the first thing that you have to do is change your name. I'm like, I have been working with this name for last, like, by that time I was working for like 13-14 years. I'm like, मैं अपना नाम कैसे change करूँ? And he said a very interesting thing and actually true. He said, let's say if we give you a movie, a serial or whatever, you get featured on a big screen and people want to know who you are. If they go and search Varun Dhawan, they will never find your picture. They will only see the other actor Varun Dhawan's picture. But even after when he said that, I said, I'm not going to change my name. So when I was on TV, my social media handle was TV ka Varun Dhawan. Then I was with a brand here in Dubai and that's how my radio brand ka name tha ka Varun Dhawan. And now I said, all right, I might change jobs but I want to live here in Dubai. So now it's like Dubai ka Varun Dhawan. That's the story. Bro. I have to clarify every time that this is my real name. I feel like you need a reel just for this. अपने नाम के लिए तेरे को एक reel चाहिए. And I'm elder to him, so I'm the OG. वो मेरे बाद है. Have you checked the SEO now in Dubai? Like if अगर वरुण धवन टाइप करते हैं तो ही आता है. कभी नहीं आएगा मेरे पास. अभी भी नहीं. He's any day a bigger star, man. Fair enough, सही है. So, bro, you grew up in India, right? Yeah. We grew up in Dubai. And there are so many differences. I want to ask you first. If I have to ask you, तुम्हारी first car memory क्या है? What was that first car that your family got back in the day or you wanted to buy? Okay, Your so what my aspiration. family got back in the day, my dad got a Mercedes C-Class at that time, the 1994, 1994, you had a Mercedes. Yeah, like when I was on this thing, I had a green color. I used to call it green Merc. Okay. Because we had, Are you from a very rich family? Yes, you are then. If you have to take that pause. Not a middle class family, is it? Or back in the day? Back in the day, like Bro, he had like 6 cars at home. So not a middle Like class that. family. But Not a so middle yeah, class. like, Not a that middle that class. was clear. like, but by the time I grew up, that all went down. सबसे सस्ती वाली गाड़ी कौन सी थी? Was a Mercedes? Yeah. No. No. I mean, What about you? I had a Corolla, bro. I'm from the Corolla family. Yeah. That's So what when I had. kids who grew up in India, most of them, if they come from a middle class family, their first car used to be a Maruti 800 or a Fiat. और अगर best अगर थोड़ा बहुत पैसा एकदम से आ गया, then would be not even Maruti Esteem. You know Maruti I know Esteem? Maruti Suzuki Zen, bro. Yeah, Zen came much later. वो 800. That eventually evolved into an Alto. Oh, the Zen is Alto. It's just almost the same, yeah. Fair. तो मारुति की एक जो sedan आती थी used to be Maruti 1000 because it was 800 I knew. 800 छोटी गाड़ी थी और a 1.0 hatchback. liter, baby. 1.0 So liter. when we used to go back to India, like some of my family members had the Maruti 800. Like Maruti 800 So was the OG, man. But over there, but after that, when I used to come back, I'm like, So it's all about cars, right? So the first vehicle that you wanted to buy as a teenager when you were reaching that age where you can have a license, what
What was that first vehicle? Could be anything. It was the Merc C63. AMG. AMG. ये वाला बंदा है bro. I really wanted. I still want that still- car. What But would you? I wanted or what I got. वो अलग चीज है. I got something else. I wanted a GTR, obviously. You know, kids who grew up in India. Bro, I'm that kid who grew up watching Tokyo Drift. तो अब देख ले. You know, like मेरे आसपास था भी ये सब. देख, एक तो होता है कि एक रियल एस्पिरेशन होता है और एक ड्रीम होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट रियल एस्पिरेशन दैट यू नो आई एम गोना गो एंड कन्विंस माय पेरेंट्स टू बाय मी दिस. लाइक GTR तुम कन्विंस अगर कर पा रहे हो पेरेंट्स को तो फिर then नहीं नहीं वो नहीं वो तो मेरे को. No. What I would convince my parents, Yeah. I tried for a normal like Merc only. I never got it. No. But he got a Nissan Petrol, the box type VTC or whatever, Yeah, so- VTEC one, bro. My family's thing was like सबके पास घर पे गाड़ी है. My sisters had cars. My mom had How cars. many My dad family had members cars. do you And have? then तब मेरी बारी आई. They were like, अभी घर पे 4 गाड़ियाँ हैं ना. Just use one of किसी them. के- When one will be. Are you the younger one? I'm the youngest one. है ना तो So तभी they're ऐसा like सबका last- यूज्ड माल मिलता है Yeah, इसको. सबका use But माल. bro, वो वाला यूज माल कोई भी ले लेगा. You know, RX, Lexus. अब LX, नाउ Lexus, you would take it, bro. कट टू इंडिया. एक मिडिल क्लास लड़के की while growing up reaching that age, first of all the realistic aspiration used to buy a bike. And back in the days जब पल्सर वल्सर भी लॉन्च नहीं हुई थी when I was growing up, it used to be a CD100. It used to be an RX100. एक Shogun Shogun करके जो बाइक आती थी. These are all premium bikes. I'm saying Shogun is a premium bike. But I'm saying basic एक आता था. There's this scooter बोलेंगे moped type. Not even scooty. You have to search Hero Puch. Google it right now. Hero HEROPUCH. Oh, And Hero bro, Puch, ये Hero तो शक्ति. उसमें थी bro. Shut ये the- वो कौन से सलमान खान जो जुड़वा होता है bro, उसमें एक मर जाता है. That used to be like जैसे अभी एक्टिवा चलती है ना, जैसे Yeah, स्कूटीज yeah. चलती हैं. Yeah. This used to be that bike. Bro, this has pedals like. नहीं इसमें पैडल नहीं, वो लूना थी. हाँ वो लूना थी. That's what I'm thinking about. ये गेयर्ड होती थी एंड ये ऐसा था कि मेरे स्कूल में मेरे बैच में हर बच्चे की अगर फर्स्ट कोई मोपेड है या फर्स्ट कोई 2-wheeler है, यूज्ड टू बी अ हीरो पुक. एंड नाउ पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट दिस. No, tell me where does like all this bullet and all land in? Oh, that's तो बहुत बाद में. तो पहले के टाइम पे होती थी राजदूत. सो उसका एड आता था. राजदूत? राजदूत. Oh, you don't even know about You don't know राजदूत. shit, man. Oh बता my मेरे को God, यार. you don't even know about राजदूत. I Have you have heard no about idea. Yazdi? नहीं No. bro. What is Two- SD? If it's 2-wheelers, I only know Guys, Apache, RTR. तुम That's लोग it. तुम हो इंडियंस ही हो ना तुम दोनों. हाँ, Bro, यहाँ- तुमको इतना ट्रोल मिलने कमेंट्स में. You don't know Yazdi, you don't know Rajdut, all you know is Royal Enfield. This is what जो दिखता है जो screen पे. like- Because Royal Enfield अब हो गया पॉपुलर. But Yazdi used to be उस जमाने की cruiser bikes, tourers or not exactly chopper but yeah used to be Okay. like that tough bike. The one which is like, जो Jumeirah में जो लोग चलाते हैं, you know those people. Yeah. With big one. What is No, it no, called? no. वो तो Goldwing. Goldwing. Goldwing अलग है. Goldwing तो is a different league. वो तो one bedroom apartment है on 2 wheels. Bro, we Yeah. talk about India. Yeah. Okay, so Like like the US sponsor. Then so जो Yazdi और राजदूत जो होती थी, राजदूत used to have 2 silencers पीछे. Oh. So my dad So used is that like a great thing? ये भी तो बता ना. It used to be like, you know, आपके पास एक अच्छी बाइक है. Okay. And then my dad used to have one. And then when he got married, तो वो ऐसा हो गया था कि लड़के के पास ऐसा बाइक है तो मतलब ये लड़का बिगड़ा हुआ लग रहा है. My dad had to sell the bike and buy a scooter. A Bajaj. Oh my God. तुम्हें तो Bajaj Priya पता है तुम्हें? बजाज मेरे को पता है. Wait a second. Do you know Bajaj Priya? Priya. no, dude. What is? Do you know LML? LML I know. This is a brand. LML. LML Vespa. Vespa. Vespa now you know, but you don't know LML. Oh my, you have to check all these pictures of LML Vespa, Bajaj Priya scooter, Rajdut, Yazdi, Yamaha RX100, Bro. Shogun. Oh my God. You're gonna तुम put them कहाँ up as you say them. Oh my वो आने वाले थे साथ में. That's Crazy. So yeah, clearly, I think growing up back in India versus growing up in Dubai is absolutely different. And I feel people who grew up in India, they had a different kind of struggle, even if they come from a middle class family. Versus you guys, it's a different. आज की तारीख में it's very similar, I can say. Like people have access to a lot of stuff back in India as well. And now people are more informed because of internet, of course. But Yeah. people, I think kids back in India are much more street smart and their aspirations are at a different level altogether. I think competition is a lot in India, right? हर चीज में अब दुबई में नहीं है क्या भाई? Even No, I mean, like in here. Dubai, the competition when you're growing up. now. Yeah. I've seen like in India, you need to have like 90% से ऊपर. You're considered like
good kid, but oh, you're like यहाँ अब बहुत हो गया है. Now it's more. When we were growing up, of course, even we had like toppers in the school Yeah, and yeah. college days. But like my family never forced us to score big, and they were pretty happy in whatever. As far as we are, passing our exams. yeah, as long as you pass. That's the same thing was in my like this thing because no, they अबे tried. जिसके घर में 6 गाड़ियाँ थी उसको क्या टेंशन है? नहीं ब्रो हमें No, बोलो they कि tried. They उनको tried. कोई टेंशन नहीं थी भाई. They tried. They're like पर लेकर आ 80, 90 नहीं हुआ. Then they were like, okay, bro, now just pass. Like do something. Like, इसका तो ये घर की गाड़ी खोल के ठीक करता रहेगा, उसी में इसकी जिंदगी निकल जाएगी. कि उसका आराम से निकल गया ब्रो उस टाइम पे. चल सही है. सो चेक पॉइंट. सो एक तो गाड़ी की बात हो गई, ठीक है. When you were growing up versus when we were growing up, what games did you play? Like, what was your environment like in terms of your friends and stuff when you were growing up? Was it more like school के friends ज़्यादा थे या आसपास में जो रहते हैं वो ज़्यादा थे? community or whatever. Community friends. So it depends. जब schools on होते थे, तो it used to be most of our school friends. With school friends, and I had a big gang. I think that's one thing that's a big striking difference between friendships of today versus friendships back in the 90s. In the 90s, we never had ये दो मेरे best friends हैं and these are my best friends for life, which is what happens now. हर किसी के 2-3 छोटा सर्कल होता है. Back in our days, I had like, even today I'm in touch with at least 5 to 6 friends of my childhood. That's now because with life and whatever happens in life, you kind of lose contact because people change. Yeah. But when we were kids, मतलब हमारे पास इतने दोस्त होते कि हमारे पास पूरी एक क्रिकेट टीम होती थी at any given point in time. And the thing used to be like, we used to go to school, come back, study for 2 hours from, let's say we reach home at 1:30, then 3 to 5 we used to study. 5 o'clock, my brother made a point that we will step out of the house and we'll do something. We'll play football, we'll play cricket, we'll play basketball, we'll Anything. beat each other out and no matter Yeah. what. Boy And stuff. then by 7:38 we're going to come back home. And during that time, there is no way for our families to connect with us. There is no mobile phone, nothing. We are just out. Our families would know, okay, either they're going to be there on the field or they're going to be in one of these houses. That's it. They would not know what we are up to, if we are okay. There are times when I fainted on a main road because I got hit by something. And I fainted on the road. People had to bring me back to my home and my family is like, अच्छा बेटा ऊपर जाके आराम कर ले, हम आते हैं. आज की तारीख में we can't even imagine. So yeah, that was one circle of our school friends. Then there was colony के, इंडिया में colony बोलते हैं जो यहाँ पे communities बोलते हैं. कॉलोनी गली में गली के दोस्त होते थे, उनके साथ खेलना, लाइक ऊंच नीच से लेकर गली क्रिकेट से लेकर नालियों से बॉल. प्ले गली में चेक पॉइंट गली में क्या खेलते थे लाइक यूजुअली? क्रिकेट वी यूज्ड टू प्ले. वी यूज्ड टू प्ले स्टैपू व्हिच इज हॉपस्कॉच. हॉपस्कॉच नवी लड़कियों टाइप का गेम होता है, बट जब अब छोटे होते हो लड़के लड़कियां सब खेल रहे हैं. देन वी, आई थिंक मोस्टली इफ आवर फ्रेंड्स आर देयर, देन डिड यू प्ले दैट कंचा? नॉट दैट मच, नॉट दैट ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे यहाँ पे सड़कें प्रॉपर बनी हुई थी, तो आई नो आई एम फ्रॉम राजस्थान, बट हमारे यहाँ सड़कें थी. I have only played that game when I've gone to India. What did you play? Wait, what did we play here? So cricket I played. I'll tell you what Football you also I played. Football we used to play a lot more because they used to make like park mein you could play easily football. Bro, to be honest, like we used to play football only when the weather was good. यहाँ पे weather का अलग scene है, right? Like it's so hot, like even today it's like 50, No, 49. so the thing But is, like, I Bro, think we used to play CS, Counter Strike and stuff in. no, even when it was like that, I'm saying. I used to play a lot of football even when it was hot. Like you get it in the heat. but- Also we used to play like evening time, like 4 baje and all we start playing 4-5 baje. Yeah, we used to play like just basic cricket, And football. Counter Strike and all we used to play. That depended on. हेलो the एक मिनट, क्या बोलते हैं? टाइम आउट, Checkpoint. चेक पॉइंट. पतंग किसने उड़ाई है? कभी नहीं उड़ाया. मैंने उड़ाई है. ये वो काइट बीच वाली पतंग नहीं बोल रहा हूँ मैं. नहीं, मैंने छत पे जाके काईपुर 6 वाली पतंग उड़ाई है, bro. पतंग उड़ाई है, मंजा बनाया है. पतंग को से स्टिफ रखने के लिए वो नहीं उसमें किया मैंने. टेल लगती है. तो वो टेल या तो आप पतंग का जो दूसरी पुरानी पतंग है उसको फाड़ के बनाते हो, या फिर कैसेट देखी तुमने? कैसेट देखी होगी ना, वो जो ऑडियो कैसेट्स होती थी, ऑडियो कैसेट्स की या वीडियो कैसेट्स की रील निकाल के उससे पूंछ बनती थी. एंड इफ यू हैव दैट टेल इन योर काइट, देन द पतंग इज गोइंग टू जस्ट स्टे स्टिल. वो करते थे. और जो तुम अभी वेदर की बात कर रहे हो, आई रिमेंबर दिस अमेजिंग स्टोरी. 1 o'clock my brother reaches back home. And 14th of Jan is Makar Sankranti, which is the biggest day for kite. It's a kite flying festival. Okay. तो हम जान के महीने में ही है. And we reach home and my mom is waiting कि चलो बच्चों को खाना खिला देती हूँ. And my भाई is गायब.
ही इज नोवेयर टू बी सीन। मॉम ने कहा कहाँ गया, छत पे गए, वो पतंग उड़ा रहा है, इट्स मतलब दबा के धूप है, ठीक है, बहुत तेज धूप है, अगेन राजस्थान कोटा, पतंग उसकी से लाइट देख रहे हो ना ऐसे, पतंग उसकी बिल्कुल सूरज के सेंटर में, ही कांट इवन सी एंड ही इज जस्ट डूइंग दिस। मेरी माँ कह रही तू कर क्या रहा है, मम्मा पतंग उड़ा रहा हूँ। और माय ब्रदर यूज्ड टू बी सो डार्क इन टर्म्स ऑफ स्किन टोन बिकॉज ही वुड जस्ट स्टे ऑन द टेरेस फ्लाइंग काइट्स, और वो पूरा टैन रहता था। Yeah, I mean, उसके like, चक्कर में मैंने खूब उड़ाई। काइट बीच ही गए बस हम यहाँ पे दुबई में ब्रो। बट यार आई एम एक्चुअली वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि यहाँ पतंगे उड़ती हैं। संक्रांत वाले दिन देयर आर प्लेसेस, क्रीक पार्क चले जाओ, वहाँ पे काइट फेस्टिवल होता है, यू कैन लिटरली वो पेच लड़ाने वाली पतंगे उड़ती हैं। और आई जस्ट डिस्कवर्ड दिस ईयर कि ऐसा मंजा मिल रहा है ब्रो। ये like, पतंग people मुझे नहीं पता celebrate था। this, like in my like area and all, people don't celebrate this, so that's the reason we What do you know. mean in your area? Which area? Himachal and all, like my family never yeah, told of me, course. like- You're talking about India, yeah. There are places जहाँ पे वहाँ पे तो उड़ाने से पहले ही कट जाएगी ब्रो। अरे हमारे यहाँ पे ऐसे तारों में फंसती है, उनके यहाँ पहाड़ों में फंस जाती है। Fair. चल से check point. When you were growing up, what were the stupid and dumb beliefs that you have as a kid? Can you give me like a few of them? जैसे for example अगर chewing gum खा ली तो पेट में फंसी हुई है। वो तो मैं भी आजकल अपने बच्चों को बोलता हूँ। Bro, You also tell them, वो अगर watermelon seeds खाया तो तो फिर पेड़ ऊपर से- पेड़ उठ हाँ। जाएगा bro। मच्छी के ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए, हाँ, वाइट स्पॉट हो जाते हैं। वो, हाँ। तो मैंने तो एक बार ट्राई किया था क्योंकि मेरे को ऐसा, मेरे को और घोरा होना है। Bro, I was told कि pigmentation हो जाती है। I was पता like, नहीं यार, ऐसे ऐसे सब चीजें अभी साइंटिफिकली होता है कि नहीं होता, वी डोंट नो। Which was the other one, bro? कैंची लेके मत भागना। कैंची जो घर डायरेक्टली पे लड़ाई होती है। हाँ, घर पे लड़ाई, चाबी मत बजाओ, चाबी मत बजाओ, सीढ़ी के नीचे से मत जाओ। बट देयर इज ऑफ कोर्स बचपन में लगता था कि कुछ होता होगा। Yeah, but like I पर कुछ understand होता है। वो scissor का क्यों बोलते थे, because वो sharp object actually sharp object है and you were तो running सीढ़ी around के with- नीचे से मत जाओ, लैडर के नीचे से क्यों नहीं जाओ, क्योंकि लैडर गिर सकती है। Yeah. लॉजिकल बात है, There is, लेकिन but बच्चों को why- लॉजिक कौन समझाएगा? Why would you be like बिल्ली वाला घर पे लड़ाई होती है like बच्चों को डरा के समझाते हैं। एक चीज जो ऐसा नहीं मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताई, बट आई यूज्ड टू बिलीव कि ये हो सकता है। सो ऑन टीवी देयर यूज्ड टू बी अ शो कॉल्ड मैनिमल। अभी अगर ये पॉडकास्ट कुछ लोगों के पास पहुंचेगा ना, उसमें से भी मैं 99.9% लोगों को नहीं पता होगा। भाई आपको पता है, यू रिमेंबर मैनिमल, यू रिमेंबर? सो उस मैनिमल में एक जो मेन लीड कैरेक्टर होता था, दैट कैरेक्टर कैन टर्न इनटू एनी एनिमल और बर्ड, ठीक है, किसी भी क्रीचर में वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता था। तो उसका फेवरेट होता था कि उसको पैंथर, ब्लैक पैंथर बनना है, तो वैसे ऐसे जाता था यूं, और फिर ना ऐसे कट शॉट आता था हाथ का क्लोज, और फिर वो ऐसे 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 से कुछ करता था, फिर उसका ऐसे हाथ काला होता था, और फिर नेक्स्ट शॉट आता था कि वो एकदम बना हुआ है ऐसा जैगुआर टाइप का, पैंथर टाइप का कुछ बना हुआ, लाइक वाह। तो मैं कभी कभी छत पे जाके सूरज की तरफ यूं करने की कोशिश करता था, और मैं सोचता था कि मैं भी शायद एक दिन हो जाऊंगा कन्वर्ट। ऐसे बेवकूफ थे हम, ऐसे Bro, हम भी ऐसे ही थे ना। If a spider bites me, बन गया मैं Spider-Man। ऐसे ऐसे करता था bro. I used to wear like Superman का cape and all this. हाँ, टावल बांध के। I would, हाँ, towel बांध के। I was like, call me Superman now, you know, like I had a Power Ranger का costume. And now you say call me daddy. Yes, one day. Fair enough, bro. There was one more where if you cut your nails at night, Yeah. what's Yeah. that scene? Bro? Correct. Why Same. is that? You'll step on it. This Yeah, it's sharp actually. I don't know. Yeah, it's sharp. तो पॉइंट यही है कि आप अगर नेल रात को काटोगे अंधेरे में, क्योंकि ये तब बने नॉर्म्स जब मतलब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो आपने अंधेरे में कैंडल वैंडल में कहीं काटा और नेल्स आर प्रीटी शार्प, और नीचे गिर गया, किसी के पैर में चुभेगा। लॉजिक कौन समझाएगा बच्चों को? उनको ये बोलने का नहीं करने का, कुछ ना कुछ हो जाता है इससे। ऐसे रिलीजन भी ऐसे ही चल रहा है भाई। ये रेड फ्लैग है ब्रो। भाई रिलीजन भी ऐसे ही चल रहा है दुनिया भर में, सबको ये बता देते हैं कि ये मत करो, इससे कुछ खराब हो जाएगा, बट हर एक चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, एक लॉजिकल रीजन होता है, बट अब इतना एक्सप्लेन कौन करे जाके यार? ऐसे ऐसे बोलो। Do you think Let them- logical let them explanation figure- is let them the figure it easier out. explanation? It's a lengthier explanation. It's easier, I feel like. अरे imagine you have to explain it to millions and millions of people. You can't go. ये बोलेगा Spoken like a true father. मेरे को लगा बोलेगा चेक पॉइंट। The full family expects logic from this man और ये थक गया है। किसको समझाएंगे यार? मत करो, खराब होता है। सही है। चेक पॉइंट। सो अभी आजकल देयर इज अ ट्रेंड वेयर अ लॉट ऑफ दीस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, ये लोग सब इंडिया जा रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू द वर्स्ट प्लेसेस इन इंडिया एंड हैविंग द वर्स्ट स्ट्रीट फूड एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन दे आर पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया सेइंग कि India shit. it's a trashy place and this and that. So there are two sides to it, okay?
And I think now is the right time for me to be absolutely honest about it. I came in Dubai in 2021. And when somebody arrives here in this country for the first time, and then you meet Indians or Pakistanis, and then people who've lived here, like you, or people who've lived here for more than a decade, let's say, they are all raving about Dubai is this and UAE is this and it's beautiful. You have skyscrapers and you have malls and you have brands. And I used to advocate India to a level where I would just go and tell them, why are you comparing a Dubai to a Lucknow, Nagpur, Kanpur, or a Bihar or Patna? Why don't you compare a Dubai to a Delhi, Mumbai, Bangalore, a metro city? yeah. In Delhi, you have the fanciest of the buildings. Mumbai, you have Antilia, which is the most expensive house in the world, right? Yeah. These are fancy buildings. You have in Delhi, you have Emporio Mall, where you have It's crazy, bro. all the luxury. You have the Fendis and the Balenciagas, and you get everything in India now. What are you talking about? You have all the luxury cars now in India. People are rich, And I used to advocate that so much. Cut to 2022. एक साल में ही? नहीं 14 महीने. Okay. It took me about 14 months or I think more that I went back to. Almost I think 2 साल हो गए थे I went back to. And that video also went viral by the way on my social. Anyway, I went to India and I landed in Delhi and I was so excited. And it breaks my heart to say that when I landed and I stepped out of the airport, I could see what people could see, which I couldn't see when I was living there. The filth, the dirt, the untidiness, the chaos, which is all controlled by people who live there. It's that's a madness that they can live with, and I used to live there as well. But वो ना जब आप in the middle of chaos होते हो ना, आपको chaos नहीं दिखता है. It's like a chess game, जो बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है ना, उसको ज्यादा समझ में आ रहा होता है. जो खेल रहा होता है उसको अपना पर्सपेक्टिव दिख रहा होता है. And the moment I landed in Delhi, I went out of the airport, I could see टैक्सियाँ इतनी गंदी हैं. ये गाड़ी, फर्स्ट रिएक्शन अपने यहाँ दुबई में एक गाड़ी पे डेंट होता है तो सड़क पे ले जाना अलाउड नहीं है. लाइक उस गाड़ी में मतलब कोई भी सरफेस फ्लैट नहीं है. उस पे सिर्फ स्क्रैचेस, सिर्फ डेंट, छेद हो रखे गाड़ी में यार. वो गाड़ियां सड़क पे चल रही हैं. और मैं सर्दियों के टाइम पे गया हूँ. ड्राइवर जो अंदर बैठा हुआ है वो तो एसी नहीं चलाएगा ना, क्योंकि अब तो सर्दियां हैं. अबे हीटर चला दे. उसने 50 लेयर स्वेटर की पहनी हुई है, जो वो 25 दिन से नहाया नहीं है. उसकी बॉडी की गंध, उस गाड़ियों में सब लोगों के सामान की बदबू. एंड आई वाज लाइक, oh my god, fuck, I have become a Dubai guy now. I was so upset, bro. I was so upset, honestly. And it breaks my heart that and now I think it's impossible to clean it up. But having said that, India still has beautiful places. You go to the northeast, you go to down south Kerala, you go to some remote areas in Rajasthan, Madhya Pradesh. They are in terms of nature, they are so pretty, they're so good. And of course there are pockets in India where you go to fancy malls, it's all clean, it's all taken care of. But yes, India की population, I think India का सबसे बड़ा asset है और India का सबसे बड़ा सरदर्द भी है. Yeah. If you can control that, then nobody can stop us. That's it. Do you think you can ever receive जो अभी for now current जो दुबई में standard of life है? नहीं possible है. ना कितने साल लग जाएंगे? नहीं वो हो ही नहीं सकता. There'll be some other development, but not towards just luxury, right? I feel like in India इतने सारे लोग हैं that even the lifestyle of Dubai does exist, but वो एक tier है. You know what I mean? I think it would not take. You don't need years. You need a Thanos. तभी हो सकता है. मेरे पास है Thanos, bro. I have Thanos, bro. My puppy's name is Thanos, by the way. Wow. वो उसको आता है चुटकी बजाना. इतना सा है वो सबकी चुटकी बजा देता है, bro. I think वो हो जाएगा तो शायद कुछ हो सकता है. But now, so you're speaking of India, right? I just want to let you know, like there are 19,500. 95,000, bro. Or 95,000? Yeah. 95,000 plus languages spoken in India. Including 95,000, are you including sure? Regional dialects and everything. Could be, yes. Yeah. Out of that, only 22 or 25 Are recognized. are recognized. Wow, bro. Like, So let's imagine, bro, हर Bro, colony में अलग language चल रहा होगा. Imagine नहीं. We have lived that life. I'll tell you an example. So मैं राजस्थान से हूँ. तेरे को क्या लगता है राजस्थान में what language do they speak? Marwadi. Is that it? नहीं बहुत है. Is that it? There are parts of Rajasthan where which is So linked to मारवाड़ी Gujarat also. राजस्थान के मारवाड़ एरिया में बोली जाती है.
Then there's another area called Hadoti in Rajasthan. उसके अंदर कुछ cities and districts आते हैं. There they speak Hadoti. Then there are few places in Rajasthan, like these are like pockets and district division है. उनके खुद के languages. No, एक ये कह सकते हो मारवाड़ी is the main domain. उसके सब लैंग्वेज के डायलेक्ट्स हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर ट्वीक्स हैं. सो देन देयर इज मारवाड़ी मेन, देन देयर इज मेवाड़ी जो मेवाड़ रीजन में बोली जाती है. मारवाड़ अलग है, मेवाड़ अलग है, हाड़ोती अलग है, तो वहाँ हाड़ोती बोलते हैं. ऐसे ही, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू क्रॉस 100 किलोमीटर्स, द फूड दे ईट, द क्लोथ्स दे वेयर, द लैंग्वेज दे टॉक इन changes. Wow. It is true. It is true. It's only when you live in India or when you traveled enough in India you realize. And that is the case with every state. ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में सब मराठी बोलते हैं. मराठी में भी I'm pretty sure. I've not lived in Maharashtra that much, but I'm pretty sure वो region by region कुछ ना कुछ dialect का फर्क होगा. तो बिहार में मैथिली बोली जाती है और दूसरी कौन सी भाषा है? भोजपुरी बोली जाती है. हाँ, मैथिली भोजपुरी बोली जाती है. ऐसे अब अपने को दो ही पता है. अब जो बिहार में रहता होगा उनको पता होगा कि यार उनके This तो you stayed there or you're from there तो you know कि आसपास. अलग हम बिहारी नहीं है ना. Okay, so I want to ask you guys, let's get into the segment, okay? Like, Checkpoint. I want to ask you guys a question. Let's see if you guys know the answer to this, yeah? Top 5 most spoken languages in India. Oh, you have a list. A legit There is a list. Yes, There is this thing. Top 5 spoken languages. Yes. Is in so terms both of for you. numbers. It has to be an Indian language, like Yeah, English. हाँ. No, नहीं, like, Indian. नहीं, English नहीं होगी ना. नहीं. मतलब English is spoken highly in India. Yeah, like, you can, but But जो भी है, I feel like English also still wouldn't make the top 5. You know what I mean? It's India, bro. Okay. 600 million people in India do not have internet. wow, that Do you know data that? you have. right. Yeah. So getting on to the question, top 5 most spoken languages in India. Okay. First one will be easy for you guys. हिंदी. Yeah. Hindi. First one is Hindi. वो तो छोड़ दे अब. Yeah. So wait, let me say. Second. नहीं, don't say it now. Let us Are we guess. doing it Is together Hindi? or are you only Don't- asking? don't Hindi. say na- You said Hindi number 1, right? हाँ, Hindi. That's Data correct. दे रहा है, data. Okay, हिंदी का डेटा. So 528 million people speak Hindi in India. That's not even half. That's 1/3, I think, give or take. 1.4 है अभी billion. हाँ, तो So 1/3 not even के half. आसपास हो गया. Now, Crazy, bro. Also, English you thought like will be top 5. 5 में भी नहीं है top. Tamil. yeah, Tamil is the 5th Oh, 1 in 5. and 78 million people speak Tamil. That's it. That's it, bro. That's it. Why? That's Okay. lesser than the population of UP, bro. Listen, do you know about these Yeah, top 5 मेरे languages? को तूने देखी enlist चोर? मेरे को थोड़ा आइडिया है बस. Okay. Because I told him about the question. Okay. तो ये हिंदी तो मेरे को पता ही हिंदी था. तो of course ये भी होगा पता ही. था कि इंग्लिश नहीं है. English. That's why I ask. मतलब Yeah, I'm also Indian- guessing with you. Indian I'll- language ही होनी चाहिए. Okay, so there is Tamil. So you got 1 and 5. What are the bigger states, bro? 1 क्यों 2 हिंदी भी बोला ना मैंने यार. हाँ, so that's No, right. 1 and 1 5 हो गया ना. 1 1 and 5. अच्छा. Then I ranking thought wise. you said 1 in 5 you got. No. now. 1 1 and 5. 1 अभी and 2, 5. 3 and 4 बचा है. Which is a big state. That's what I'm thinking. सोच ना. But वही है ना जैसे मुंबई महाराष्ट्र is big. I know, but जैसे राजस्थान is the big. UP is the biggest. But UP में बहुत languages हिंदी बोली जाती बोलते है. हैं ना इसलिए इतने सारे लोग बोल रहे हैं. नहीं हिंदी बोलते. यूपी में भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. मराठी. Yeah, Marathi is number 3 with Oh, 83 nice, million nice, people nice. speaking Marathi. भोजपुरी. इतना भी Bhojpuri. नहीं है. अरे सिनेमा तो बोला है ना यार. सिनेमा Like, तो. cinema, like how you cinema. said Marwadi is the main. Yeah. Think of like Bhojpuri is also, I don't think it's the main, right? There'll be one big main of it. Like, think of it from other You states. said ना some मैथाली कौन है वो? मैथिली sorry. मैथिली. No. No, Maithili won't be there. Okay, I want to say Malayalam, but I have a वो feeling. हम यहाँ रहते हैं. Okay, उसका influence है. exactly. But उसका I don't think Malayalis है इतने इंडिया में. No, Malayalam is not in नहीं? top 5. कन्नड़ा भी नहीं होगी. Because that's a- कन्नड़ा कितने कहाँ बोले आती है bro? I think it's there in Karnataka full. right? बस तो कर्नाटका is not that big a state. Okay, you have to go towards like the east. Oh? Bengali. Bengali. अरे यार. Bengali, yes, Yeah. Bengali. That's number 2. Like Number 2. 97 million people speak Bengali. Bro, there's a whole country that speaks Bengali, bro. We should have gotten to that. बंगाली. Now you only- हो गई, बंगाली हो गई, हिंदी हो गई, अपने पास तमिल हो गई, तमिल And 3 Marathi. और मराठी. और मराठी एक बची है. एक बची है. Which is that Number 4 is remaining. So you want me to answer it or you guys will still think about it? I think We want to do a reel on this, so why don't you leave the answer in the comments and let's see if you get it. Yeah, let's do that. I'll give you the answer. चल सही है. हाँ फिर बता भी. ना. बता नहीं रुक जा, दो. मेरे को सोचने दे. बता, एक मिनट सोच, सोचने सोच. दे. एक मिनट सोचने दे मेरे को. टट 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 टट
टटट से शुरू होता है bro. तेलुगु? हाँ, Telugu bro. 82 million people speak Telugu, bro. And that's in Karnataka, right? This नहीं, तेलुगु would कहाँ be, कहाँ होता है? You were saying Kannada and also I was No, like, that's okay, what- no, उधर ही close, like, you know what I mean? Like, Telugu cinema is massive, भाई. Yeah, bro. Telugu cinema. I is think they are one of the highest paid अभी, right? The main actors जो है वहाँ के. हाँ, but I think उनका जो regional cinema है. So I was in Chennai auditioning for a TV channel that I was working in, and हमने कुछ 150-200 लोगों का इंटरव्यू किया होगा वहाँ पे, and all of them used to work in cinema. All. Like तुम कर क्या रहे हो सारे के सारे लोग? And they said हम लोग जिस होटल में ठहरे हुए थे उसके पीछे ना एक there was this खंडर जैसा होटल जिससे आधा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके छोड़ दिया. मतलब normal वो motel types. हाँ? Motel types. नहीं हो नहीं गए नहीं ना. नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग half done half done. not even What? या हाफ डन बिल्डिंग थी एक. You were staying there? नहीं मेरे होटल के पीछे पागल. मेरे को लगा तू कहीं पे भी जाके. तो उन्होंने बोला कि वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना ये ऑन पर्पस ऐसी छोड़ी हुई है बिकॉज दैट बिल्डिंग इज यूज्ड इन शूट्स Oh. मूवी में. सो जो होते हैं ना Like a ऐसे set. शॉट की धक्का दे दिया किसी को, वो बॉस के लोग वहाँ पे गुंडे के लोग वहाँ रहते हैं, तो वो वैसा द सिनेमा देयर. उनका जो रीजनल सिनेमा उनकी बजट लो बजट फिल्म्स होती हैं बट वो मैसिव पैसा कमा लेती हैं बिकॉज दे कवर फार्मिंग वाले इश्यूज हो गए, गाँव के इश्यूज हो गए. सो इसलिए बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग सो मेनी फिल्म्स जो हमें को देखने को मिलती भी नहीं, वहीं उनके स्टेट में ही कंज्यूम हो जाती Until है, it gets like translated to Hindi. Bro, But in- not- in- it's- which it's- only a few films get. But then a lot of Tamil. Bro, movies India get, like- में they have separate apps like how we have Netflix for like worldwide. oh you mean उल्लू? I think so. एक Z का भी. What is this? तेरे को उल्लू नहीं पता? मैं लग रहा हूँ उल्लू इस टाइम पे, बट बता दे उल्लू होता है. बैन हो गई बैन हो गई. ऑल्ट बालाजी होता है. हाँ. ऑल्ट बालाजी into 5 कर ले, that's उल्लू. Not even 5, like उल्लू Yeah, is I soft saw porn. this thing on Shark Tank also. These guys had अब come. उल्लू is soft basically. Now it's I'm banned. not talking about any porn over here. मैं ऐप की बात कर रहा हूँ भाई. तूने ऐप बोला मेरे को याद आया. तेरे को उल्लू याद आ गई. फिल्म की ऐप है ना. Anyway हाँ sorry. हाँ. तो मैं बताऊँ या तू बताएगा? बता. So they have these apps where they have more than like 135,000 like pieces of content in terms of like movie plus TV shows and stuff. All of them combined episodes. Okay. For just regional movies, bro. Like each state has like that much at least. Yeah. So I think like what we get to see here or the Yeah, big it's- cinema. Oh, absolutely. is- It's like जो हम लोग इंडिया में so to say हॉलीवुड या इंग्लिश फिल्म्स देखते हैं, तो वो तो आपके पास गिनी चुनी आ रही है जिनका मैसिव बजट्स है, हाँ. जिन जो पहुंच इंटरनेशनली पा दे रही कैन है. दे कैन बाय स्क्रीन टाइम. Yeah. But the kind Indie of films cinema- and all you won't see, na? Like on the and mostly what are you watching? Films made in the US and some in the UK. Yeah. बाकी जो आपका स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच जो ट्रांसलेट भी हो रहा है, they also sometimes make English movies. You don't get to see it. It's only अब उनका इंग्लिश एडिशन हो रहा है. जैसे भी recently the film that we all loved, सितारे ज़मीं पर. It's a copy of a copy. Yeah. Oh, First- there's Sitare Zameen Par also, right? सितारे ज़मीं पर. Tare Zameen Par was the first one. Yeah. सितारे ज़मीं पर तो ओरिजिनल थी. Has no relation with the. सितारे ज़मीं It पर. has no relation with it. It's not like a part 2 sequel. No. Okay. It's a तूने सितारे ज़मीं पर नहीं देखी? नहीं. वो खुद है ना यार. How was the movie like? It's, I mean, not the best work of Amir Khan, but that movie at least will, you know, raise a few questions and teach a few people a few things that they need to know. And what Amir has done in the film in terms of, you know, he's being that typical person जो हमारे आसपास होता है, जो मोटे को मोटा बोलता है. हाँ. कोई अगर थोड़ा क्रिपल्ड है तो उसको लंगड़ा बोलेगा. कोई भी स्पेशल एबल्ड इंसान है, Yeah. उसको अरे Call it अंधा out. है क्या, गूंगा है क्या, बहरा है क्या, पागल लग रहा है तो. So he has behaved like that in the movie, which I think is a fair thing. But तो ये कॉपी है एक इंग्लिश मूवी की जो खुद कॉपी एक और इंटरनेशनल सिनेमा. Spanish movie की. स्पेनिश आई थिंक. That's actually very good idea. Copy from each other, man. Like and make your own. पर वो ये ना यार इंडिया में अब कितना भी आप बोलो पेनिट्रेशन हो गया इंटरनेशनल मार्केट का, बट क्या होता है वो टॉप टियर के लोग ही देख रहे हैं ना इंटरनेशनल सिनेमा. एक घर में गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी थोड़ी देख रहा है यार. तो अगर उसको तुम अच्छा कंटेंट है तो व्हाट्स द हार्म. दिखाओ ना यार, क्या दिक्कत है. Fair. सैयारा दिखाओ. Check point. अभी सैयारा पे चेक पॉइंट बोल दिया. पागल सैयारा कर डिस्कस, यही तो वायरल है. अच्छा ब्रो बता, मैंने एक्चुअली सैयारा नहीं बात करी है. आई मीन देखी नहीं है. हाँ. Should I? Are you planning to? क्या लग रहा है तेरे को? Because the thing Okay, is, okay. I feel like I'm not in the headspace to Have take you up ever such been in heavy relationship? stuff. Yeah.
उससे तो मैंने पूछा भी नहीं उसका पहले. That's how it is. Sorry, उससे ही पूछ ले भाई. So सुन सक्सेसफुल की फेल्ड. अब बोल. How many Many पूछना failed पहले? also, but I'm now right now. He's still in a success right successful- now. Success right now. You are in a successful relationship now, but you've had that fair share of experiences of a failed relationship, Yeah. right? Go and watch the movie. It's not about a failed relationship. It's about what people can do to just run their relationship and survive and make sure that, you know, if you love somebody, you love them forever and ever. तो ठीक है, आप after you cross a certain age, you don't believe in all that क्योंकि आपके ऊपर life की responsibilities आ जाती हैं. But if you relate to that person that you used to be when you were in your early 20s or just hitting 20s, that's the time when we are core passionate. मतलब हमारे अंदर से जज्बा होता है. There is a reason why soldiers are all young. Have you realized? They never hire and at a soldier position somebody who is 27. Because Soldiers are always 19, 18, young recruit जो होते हैं, recruits होते हैं. They're always young. fresh graduate. Why? Because they have the passion. They have the jazba. If I tell you have to die for the nation, at that age you don't think. Yeah. You don't think मेरे को बच्चों की स्कूल की फीस पे करनी है. ओ मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, देश है मेरा. You have that jazba. वो उस एज पे ही होता है. When you cross that age, that jazba is gone. So Ahan Pandey in the film and Aneet Padda in the film, they have justified that character to the T. I'm telling you. And to consider it's their first film. Hats off. Nepotism अपनी जगह है, but that guy has done some serious shit. And there's one thing that no one is talking about. I have not even seen a single reel on that topic, which literally blew my mind because I worked in television for so many years. I know हमारे साथ ये भाई साहब भी बैठा है. आपने देखी सैयारा देखी आपने? You have to go and watch. There's this one scene. There's one scene in Sayyara where Ahan is in a fight with his band members. Okay, so band member उसको छोड़ के जा रहे होते हैं. They just literally go and sit in their car and they're like, तू अकेला गा लेगा क्या? कि इसको लगता है ये अकेला स्टार बन जाएगा, अकेला परफॉर्म कर लेगा, जा कर ले. He's like, हाँ मैं कर लूँगा. And then he turns and the camera starts following him. So he goes into that space. It's like एक mall के बीच में एक area बना हुआ है. There is a small rectangular squarish stage. There's a mic. There's a DJ console on one side. There's a keyboard on the other side, and there is a drum behind the mic, right? So he walks. The camera is following. He goes onto the stage. He picks up. He goes to the keyboard, presses a few keys. और वो loop में लगाने का system नहीं होता. You press a button and then it keeps on playing in the loop. वो करता है. Camera is still following. Camera turns when he turns back. He goes to the DJ console. वहाँ से कुछ music on करता है. उसको play करता है. Then he picks up a guitar. वो guitar का strap डालता है. और उस सीन की ब्यूटी ये है, एंड आई थिंक मोहित सूरी की फिल्म है, मोहित सूरी की ब्यूटी है कि वो जब डालता है इन अ मूवी यू वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, राइट? वो जब स्ट्रैप डालता है तो स्ट्रैप ने ढंग से आता नहीं है, और वो उसमें शॉट में वो ठीक भी कर रहा है उसको, जस्ट लाइक एनीबडी वुड डू, राइट? और फिर वो अच्छा वो सब ठीक कर रहा है तो कैमरा उसके पीछे आ गया. सो यहाँ पे माइक है, इधर आहान है, कैमरा पीछे है, पीछे से और दिख रहा है आपको कि स्ट्रैप यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड है अभी भी. एंड देन ही स्टार्ट्स प्लेइंग एंड ही स्टार्ट्स सिंगिंग. अब वो गा तो खुद नहीं रहा है, लिप सिंग कर रहा है. लिप सिंग हैज टू बी ऑन पॉइंट. दिस इज ऑल वन टेक, देयर इज नो कट. कैमरा यहाँ से इस तरफ आता है एंड ही सिंगिंग लिप सिंकिंग. कैमरा गोज वाइड, इंक्लूड्स द क्राउड. नीचे क्या है, पूरे अरीना को घूम के कैमरा कम्स बैक उसके पास तक, और जब तक ये हो रहा है बारिश भी हो रही है. तो आप ये देखो, बारिश की टाइमिंग से लेकर उसका कैमरा के मूवमेंट से लेकर क्राउड के मूवमेंट से लेकर सबके एक्सप्रेशंस, और सबसे बड़ी बात आहान का वो प्ले करना, उधर डीजे कंसोल को प्ले करना, स्ट्रैप डालना और आके गाना और पूरा लिपसिंग करना. इट्स हिज फर्स्ट फिल्म एंड दिस शॉट वुड हैव इजीली बीन अबाउट 5-6 minutes if I'm not wrong, if not longer. अगर वो अपनी फर्स्ट फिल्म, हम लोग आप अभी कैमरा फेस कर रहे हो ना, sometimes you get jitters, right? Yeah. Yeah. And you've been doing podcasts for so long now. Yeah. You still get jitters. It was his first film. Hats That's off mad. to it. Hats off. देखना सर आप जाके वो शॉट, मजा आ जाएगा आपको. That's mad, bro. So And no one is talking वो about shot. So you're telling me to look at the camera work of the film as well, Plus- like more plus- than just the story, right? That also plus उस लड़के का कन्विक्शन देखो ना यार आप. He must have prepared for this shot for so long, क्योंकि अगर वो एक जगह भी वो कहीं भी फंबल करता, कुछ खराब करता, कट है. Yeah, and then do the whole पूरा शॉट बाहर से चल के और क्या होता है जब आप 3 बार रीटेक होते हो ना, चौथी बार आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है. Feel नहीं आती. फील नहीं आता आपको. हाँ. So for that one take, I think he deserves to be seen, is all I can say. Is he like the next Ranbir Kapoor now? Because Ranbir Kapoor did a rockstar and then became that guy. You know what I mean? Is he that next generation ka It dude? depends on the films that he's going to choose. But Siddhant Chaturvedi, हाँ. Gully Boy, हाँ. MC Sher, beautiful acting man. पर उसके बाद अब
आयुष्मान खुराना, चलो बेटर एग्जांपल, आयुष्मान खुराना आपका विकी डोनर से लेकर जितनी उसने ऑफ बीट मूवीज करी हैं, ही वाज ऑलवेज सक्सेसफुल. लेकिन वो बेवकूफियां करी थी उसने मूवी, Yeah. यू इवन नो, लाइक वो उसके Yeah, साथ कौन सी अनिल कपूर की बेटी का नाम क्या है, उसके साथ करी थी ना, Oh my god, that chick, Sonam Kapoor. सोनम कपूर के साथ करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. I think so. है ना, बेवकूफियां कर. सो ही डिसाइडेड नाउ ही हैज अराइव्ड, ही वांट्स टू बी द हीरो. जो अपने The इंडिया का mainstream हीरो का जो एक इमेज होता है कि मैं गाता हूँ, मैं डांस करता हूँ, Yeah. मैं कुछ भी कर सकता हूँ. Failed miserably. But I really liked Action Hero, bro. Like, it wasn't an offbeat movie, but that movie, for me at least, it had everything in it. You know what But I mean? then you watch Article 15 and he क्या है ना, उसका चेहरा हीरो वाला नहीं है. He comes across a next door boy. Yeah, like, और वो जब वो काम करता है तो सक्सेसफुल होता है. And on the contrary, Ahan Pandey has all the elements of a superstar. And you won't believe, the first weekend I went to the theater, I didn't see it, हमारी screening थी हमारे radio station की. I couldn't watch it because I had to go for another event. But I waited for his entry. I wanted to see how this guy looks. And I saw the first shot, वो bike पे आता है. I don't promote smoking in public. तो All will be cut. वो सिर्फ तुमको दिख रहा है. That's wrong. But I'm saying I don't promote smoking and all. So मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा कि यार आप यंग लोगों को दिखाते हो, then a lot of more people, young people are going to pick it up. But जो एक swag उसका attitude था ना, so मैंने फ्राइडे को मूवी देखी. सैटरडे संडे हमारा शो नहीं होता रेडियो पे. Monday first thing in the morning I said, this is going to be kahuna pyar hai of this generation. This is going to be kahuna pyar hai for both these guys, and that has come true because this film is breaking all the records. Yeah. And they genuinely have put in the best effort. Again, another example of Hrithik Roshan. कहूना प्यार है, successful. उसके बाद उन्होंने वो मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ये यादें. Wrong choice of movie, bro. अगर ये भी अब ये उस टेंजेंट में निकल गया ना कि मैं गाऊंगा नाचूंगा, क्योंकि आई थिंक उसका भी एक है, जैसे रणवीर सिंह कर लेता है वो सब, लेकिन वो भी क्या होता है कि वो फिल्म का मॉडल ऐसा होना चाहिए, फिल्म की स्टोरी लाइन ऐसी होनी चाहिए, वेरी फिट इन. I think he has got a lot of talent in him, and he's So going is to be he the going next to be star. the next star. generation का best? हाँ, हो सकता है. हो सकता He है. has. You saw that in him. I saw that in him. I saw that. Checkpoint. हाँ जी. You spoke about if an actor is smoking on camera, Yeah. people can pick it up. Yeah. कुछ भी ऐसे कैमरा पे हो, people can pick it up. Yeah. Do you think it's related कि लोग जब मूवी देखते they want to do the same thing, so I know how much is Bollywood influence culture? I know a lot of people who say फिल्में अपने दिमाग को लेकर जाओ, और फिल्मों में जब सब कुछ होता है वो सच नहीं होता है, तो उससे आपको इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. It's just cinema. But you get influenced a lot. A lot of people do. To all those people I would say 1980s में आई थी एक फिल्म called Terminator. Terminator में दिखाया कि कैसे इंटरनेट, स्काईनेट होता है उसमें ना, द मेन विलन, Yeah. वो एक ऑटोनोमस मशीन है. इट्स लाइक एन एआई. उस ज़माने में एआई टर्म ही नहीं था ना, तो उनको पता ही नहीं था क्या. तो उन्होंने स्काईनेट के रोबोट्स को कंट्रोल करता था, एंड स्काईनेट ने डिसाइड किया कि नाउ आई डोंट नीड ह्यूमंस, यू नो, एंड आई कैन सर्वाइव, and this planet can survive without humans. Now humans are going to serve us. That's why the fight happened in Terminator. In the 80s, they could write that. And now, cut to 2025, we are watching all of that happen in real world. We have the robots now. So I'm saying cinema is a reflection of society. And society also reflects on cinema. अगर आप मिरर के सामने खड़े हो ना, मिरर भी आपको वही दिखा रहा है जो आप हो, और आप भी वैसे बनना चाहते हो जो आप देखना चाहते हो. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? लाइक यू वांट आपको अपना हेयर स्टाइल ऐसा करना है क्योंकि मेरे को ऐसा दिखना है. आई वांट टू लुक गुड. अच्छा, मेरी बियर्ड मेरे को मिरर ने दिखाई इज नॉट, यहाँ पे कट सही नहीं है, तो आई वांट टू रेक्टिफाई इट. सिमिलरली व्हेन यू सी अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, probably you and me won't do it because now we have outgrown, but there are people at that age or people with that mindset, I want to be like that star. Like Sallu bhai. तो मैं ऐसे करेगा. क्यों पहनते हैं लोग ब्रेसलेट ना यार सलमान का? आपने देखा है ना लोगों को पहनते हुए, है ना? शाहरुख खान ने अगर DDLJ में वो लेदर जैकेट और चेकर्ड शर्ट पहन लिया, सबने खरीद लिया यार, वो सबने खरीद लिया. आज एक बादशाह ओवरसाइज्ड कपड़े पहन के अपने म्यूजिक वीडियो में फीचर करता है, Balenciaga. Now you'll see everyone wearing fake. Why? Because we aspire to be like them. तो anyone who says that cinema is not reshaping the world, they are not right. They are not true. They need to look into how cinema is impacting. And time and again with eras and years, cinema has impacted people. I feel.
I get impacted, Yeah, man. I'm और मैं बड़ा इमोशनल इंसान हूँ भाई. मैं रो देता हूँ यार. आप सोचो ना किसी की एक्टिंग देख के अगर आपको रोना आ रहा है तो कुछ तो इमोशन आपके अंदर आ ही रहे ना यार. That's true. Checkpoint. Yes sir. Oh, you went into it, bro. हाँ. I really Heavy हो liked it. मैं भी सोच में चला गया, bro, but I didn't want to get lost in the thought. कौन सी मूवी देख के लास्ट रोया था तू? रोया नहीं दूंगा, bro. रोया नहीं फिल्म देख के यार. तारे ज़मीन पे देख के नहीं रोया तू? I felt sad. I mean, जो हो तू रहा तो था. रिलेट किया होगा ना उसके ईशान तो के वही ना, इसलिए बोल रहा हूँ ना. I felt sad for him and I was like, होगा ऐसे मेरे साथ भी है, ये हो रहा होगा, you know, like as you said, like if you're in the chaos, you can't see it. Wow. Okay, checkpoint. You also mentioned AI talk, right? Like Terminator में actually talking about AI, what we talk about nowadays. एक बता, like according to you, give me your top 5 of give me your top 5 reasons of why people, in your opinion, are using AI right now, or ChatGPT. Why people are using AI? Yeah, for what all activities are they using what all it? activities? In your opinion, what do you think? Okay, is there a listicle? There Oh, there is. There is a list. We'll compare. यार ये मैं KBC में आया मुझे पता नहीं था यार. ये भी नहीं, तेरे खुद का है, you know, it's your thought and we'll tell you what it actually is. Okay. That's the idea. Because you, like, for me, I think मेरे हिसाब से, like, people use it for research work या basic things, right? People are using it to make CVs. People are abusing it, sorry, let's change the word of using to abusing AI. But ठीक है, that's what it is meant for. Yeah, but there are one or two surprising things for what people do. So, according to you, what do you, in your experience, what do people use most ChatGPT like For? or AI for? Yeah. Like I know some crazy stuff that people Yeah. use ChatGPT for. You can say anything. You like- can say Like, anything. I'll tell you this one crazy thing. Like people have literally recorded their conversations with their partners and asked ChatGPT to just analyze the conversation and tell them if their partner is gaslighting them or manipulating them. Whoa. And how to come back with an answer. That's what people are using ChatGPT for. As a therapist. There's a fucking ice, man. क्या बोल रहा है? सोच Wow. सास बहू की लड़ाइयों में अब बहुएं जो है सास की Bro, कॉन्वर्सेशन like, चैट the thing जीपीटी is, में डाल who रही है. is recording the conversation, you get it? Like, when And the chat man- GPT is analyzing and telling them, okay, these are the places where this person is trying to manipulate you and gaslight you. So this is how you should respond People are next using time. for therapy, like self, like ये मेरा problem है, be my That's true. therapist. Like, That's because you true. can assign a role to your agent. Have right? you ever asked ChatGPT to pick up a tarot card for you? No, I've not done that. But I know people who do You it. know that ChatGPT can read your do and do palm reading. Read your palm. Yeah. ChatGPT can do palm reading, and I've tried it. And did it work? Was it accurate? How will I know? I just. I am how not would a I know palm if I don't reader. ask you? But you know, it will give you these mounts, these lines. पंचांग पता है किसी को? नहीं. So when in Indian, you know this thing, families, when you're born, you एक पंचांग बनता है बच्चे का तिथि के हिसाब से ग्रहों की नक्षत्र. Oh, Robert कुंडली. या कुंडली, हाँ, right? वो कौन से जमाने का लेके आ रहा है? What is it? पश्चात. पश्चात पंचांग. पंचांग? हाँ, so कुंडली for कुंडली, example. हाँ. ChatGPT can make a kuндli. Yeah, that I know of, bro. And then can actually predict your future. So You can anyway, read your कुंडली. I Pandit GPT. Pandit GPT, PGPT. Yeah, people are using ChatGPT for that. So to answer your question, of course, for office work, people are using ChatGPT Yeah. to make PPTs. Kids are using it to write essays. Your children are using it for essays. My children, they do use it to understand a lot of stuff. I've seen them. As a parent, like, do you draw a line for how much they have to use the AI? Because अगर खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हैं ऐसे के लिए तो फायदा नहीं हुआ, right? Something like do you that. think like ChatGPT is making like things very easy for everyone, like to go But out then- and get information, like you know what I mean? But then what's the harm? I And believe. there's no harm in it. I'm just- No, so, I'm- so from what I have recently heard, I might have heard wrong, but it made sense to me is that like अगर मैं full time जब मैं कोई भी like thought आ रहा है, if I'm trying to ask ChatGPT or an AI to give me their thoughts on it or their ideas on it, then I somewhat after a period of time become dependent on asking that AI the thought. Do you get Okay. it? You guys work together mostly on the podcast, right? Yeah. So let's say you have a topic of discussion and you want to just see is it interesting enough or not. You go to Ronak and ask him, okay, this is what I'm thinking about. And then he would reply you, okay, well, can we do this? And then you innovate, right? You build on it. So the right way to do it, like I have no shame in, accepting that I use ChatGPT for a lot of things that we do on our radio station also. Because the thing is, I want to check, first of all, I want to do a fact check on a news. So instead of going to Google, because Google now invariably is just going to pop ads.
Yeah. Okay, the first few searches, the results are just going to be ads. And Google have also introduced AI now, but well, out of habit, I've started going to Perplexity or ChatGPT, Yeah. and then you put that news bit in ChatGPT. It's going to give you links. Sometimes you also ask, okay, so what do you think about it? Okay, then it's going to give its perspective. Now, what me as a creator has to do is to build on it and come up and tweak it in a way that my audience should understand and relate to it. So you're training your ChatGPT to like basically. It does. अब कई बार if I ask ChatGPT a certain question, it is responding to me saying, okay, you can use this conversation in your show. Or sometimes it also understands that I'm asking certain questions for my understanding. So it gives me, it's very smart. कि अच्छा अपनी personal life में you can implement like this. It's very smart. So So it knows. my girlfriend is studying for CISI right now. Okay. What is that? It's a banking and investment का कोई exam है. So बैंक every PU नहीं bank. बोलते उसको. पता नहीं क्या बोलते हैं bro. मैं भी उस field से नहीं हूँ तो मुझे मत पूछ ठीक है. So now what she's doing is so any topic that she doesn't understand from the theoretical book that she has, ठीक है, she'll write that down on ChatGPT and she'll just explain it to me like a baby after you explain give the proper explanation. Yeah. So that was really cool and till today like she's been doing it for a week now. Yeah. Everything she asks, now it's just understood that she needs to be explained the way in which she has to explain to others Yeah. versus how she has to actually understand So it. then what's the harm? That's what a lot of people are saying that ChatGPT is making people dumb. It is because people want to be dumb. Bro, I believe that also. Yeah. Because there is a way to consume data and information. And I think the way we are consuming, I can talk about me personally because the kind of work that I'm in, I have to provide too much information every day. So I have to filter so much information कि यार कौन सी information is good for the audience and कौन सी नहीं. But I'm constantly consuming and then filtering it out, right? I don't think there's any problem in sorting it out through the help of AI. But at the end, I should always remember that I have to come up with something too personal that caters to the audience. So I don't think that's a problem. Coming back to your question, sir. Question क्या था मैं तो भूल ही Question गया आपका उस ये time था कि पे. ChatGPT किस चीज के लिए लोग यूज कर रहे हैं? हाँ. Checkpoint, sir. Checkpoint. Checkpoint, you took Yeah, me I'm away, calling bro. it. I'm calling it out. Thank you very much. Checkpoint, sir. So Checkpoint. tell me. So top 5 things, Ronak, you want to say? ये Top तेरा 5 fact है. things people use ChatGPT for. Relationship advice. Wow, bro. That means you have done it yourself. Oh ये no! तो तेरा पहला वाला guest था. क्या really? Really? Is it there in the list? No. It's on your list. Okay, fine. fair. Okay. Correcting their resumes. Correct. Yeah, I feel like they do it for like PowerPoint a lot. Okay. So Is do you it have the there? list? It's not for PowerPoint and everything. Anything related to office, work. It must be for research. Yeah, to do research and all. Yeah. So Okay. first thing, it's actually for writing help. Basically, your essays and stuff. So your resume. resume. Okay, resume. Part- Resume. part, Okay. Cover letter and all that. So yeah, resume. So writing help. Okay, then you have to tell us now, bro. Oh, We okay, already yeah, fucking I spoke on mean, it. Second thing is learning and studying. Okay. So Okay, it's which like- we also discussed. Yeah. Yeah, Fair like enough. lectures Fair and enough. all. And then there's like brainstorming and then creative ideas. Which is Which you also were correct about as yeah, well. Yeah. तो एक और है relationship advice will keep it. Relationship advice for sure. Coding help and tech support. Coding. Coding. We forgot the main reason why it was made. Yes, you are right, man. And the way technology is enhancing every day, there are articles and updates on a daily basis. Yeah. Like there was a time when I used to keep a check and tab on what's happening. I've lost track, Baba. ये Gemini में ये आ गया है कि VO3 video tool आ गया है 50 apps आ गई है where you can convert your photos into videos and that's the scary part, the kind of and we all have our pictures, our entire family there on social media, my kids are there on social media, and the scary thing as a parent is like one day somebody is going to pick up our pictures and make some random shit content out They of make it. deepfakes of like celebrities, politicians, like all the time. That's like and you can't even make out it's true or not. Yeah, The it's so quality is convincing. It's good. just gonna get better. I have seen demos of like a VO3 app. There are apps like so you pay them a subscription fee and then they'll do anything for you for free. They won't do anything. So there is one AI company in China. I forgot what their name is. No. So what they did is they made AI girlfriends. Yeah, Oh, People are paying up to $10,000 to for have that AI service. girlfriend. yeah. That's So it. it's like कितना loneliness Relationship होएगा बंदे advice. में, That's like. why. See, that's why I wanted to connect it. It's there. like you are better off with an AI than with a real human. Fair enough. Yeah.
That's how it has come to. चल check point on a lighter note. Yes, sir. ठीक है. Top 3 things that your mom yelled at you that still traumatizes you. तू मरवाएगा. खाना. खाना ready है, Like, कौन no सा वाला matter खाना? what, and if you don't even like that food, No, so you go मेरे like, नहीं मुझे नहीं if my wife will watch this, she will agree. My kids will agree, and of course my mom. And I've realized it that they are right. So जब भी मेरे सामने खाना आता है ना, मुझे तभी याद आता है कि मैंने हाथ नहीं धोए हैं. मेरे को एकदम से वॉशरूम जाना है, मेरे को एकदम से फ़ोन चार्जिंग पे लगाना है. एंड और पता नहीं क्या है ये, देख कुछ है मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम. जैसे ही प्लेट मेरे सामने आई है ऑन द टेबल, I'll get up and go. And I've realized it after coming to Dubai because I'm having my breakfast alone. मैं माइक्रोवेव में ब्रेकफास्ट रखता हूँ, माइक्रोवेव से बाहर निकालता हूँ ऑफिस, keep it on the table and then I go to the washroom. I'm like, ये मैं पहले भी कर सकता था ना. So you don't eat food which is hot, like I can't in eat. general. I can't eat बहुत ज़्यादा गर्म खाना. So I I need. think I'll You need stop that. हाँ मतलब मेरे को ऐसा है कि मैं तोड़ूँ खाऊँ तो मेरे मुंह में लगे नहीं, हाँ. है ना. It should be little गर्म, but not हाँ, like not like hot like that. I know people जिनके खाने में से धुएं नहीं निकल रहे तो खा नहीं सकते. I can't eat that food. तो मेरे को इस पे जो डांट पड़ती है ना, टिल डेट पड़ती है खाने पे. खाना आता है तू चला जाता है, खाने को इंतजार नहीं कराना चाहिए, पाप चढ़ेगा, ये वो सबसे ज्यादा So डांट. one is खाना. बचपन में जो मेरी माँ मेरे को एक बहुत डांटती थी. आई वॉज ऑलवेज इन अ रश एज अ किड. आई वुड गेट अप लेट एंड आई एम लेट फॉर द स्कूल. आई क्विकली गो, पानी ऐसे खटाखट नहाया, बाहर आया, एंड आई वुड नेवर मेक माई हेयर, आई नेवर डू माई हेयर. तो मेरे बाल ना ऐसे बिखरे हुए रहते थे. मेरी माँ, मेरे को याद है, हमारा ऐसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो सीढ़ी से नीचे आ रहा हूँ, तो मैं जब तक पहुँचा हूँ दरवाजे तक, माई मॉम यूज्ड टू येल एंड शाउट, बाल बना के जाया कर, कल को जब बड़ा होगा तेरे बाल नहीं बनेंगे ना तो तू बोलेगा माँ ने बचपन में ढंग से बाल नहीं बनाए. और वो आज तक यही प्रॉब्लम है. अगर तुमने मुझे कल, मेरा ना अभी जाके इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखना जो रील डला हुआ है, उसमें मेरे पूरे बाल ऐसे एंड आई वेंट टू ऑफिस लाइक दैट एंड एवरीवनस लाइक व्हाट हैपेंड टू योर हेयर. आई एम लाइक आई वाज टू लेजी टुडे यार, नहीं बना रहे थे मुझे. आज ये पॉडकास्ट के लिए मैं जरा Oh, for the cam. फॉर द कैंप, फॉर द Check point number 3 बताओ. नंबर 3 ऐसा कुछ नहीं बाकी, कुछ नहीं था. Come on, bro. only 2 things you was like this thing. जिसके लिए आज Your तक डांट brother पड़ती was है. he fighting with you or something and she would have given अरे मेरे you- भाई को तो, मेरा बड़ा भाई बड़ा है मुझसे ना, ऑलमोस्ट 2 years. So you used to get beaten up. I used to get beaten up, but in public I would always say I used to beat my brother. Well, that's debunked now. And then so मेरी एक और फनी चीज़, मेरा नाम वरुण, भाई का नाम है अरुण, भाई का नाम घर पे है मनी, मेरा घर पे नाम है सनी. No way, bro. टिपिकल पंजाबी. होल्ड, देयर इज मोर. माय ताऊजी इज रमेश, माय फादर इज सुरेश, माय चाचा इज नरेश. My God. ताऊजी के जो बड़ा बेटा है उनका नाम है गोल्डी, जो बेटी है गोल्ड से बनती है गिन्नी, तो उनका नाम है गिन्नी. That's crazy. फिर मेरी बुआ का जो बेटी है उसका नाम है मिनी. उसके हस्बैंड का नाम मिक्की ऐसे कुछ है. So it runs in the family for us. Dude, तो- that's crazy. तो इसलिए मेरी जो बेटियां उनका नाम है अदा और रिदा. It's all full rhyming, एकदम सिंग सॉन्ग. Nice. हम दो हमारे दो और वो दो rhyme for sure. हाँ बट या इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग. माय पेरेंट्स वर प्रीटी चिल. व्हेन आई देयर आर 2 things that I feel like I completely disconnect from the world is like when people come and tell us stories about how they got beaten up as a kid. My father, उन्होंने मेरे को ऐसे भी नहीं मारा आज तक, ऐसे भी नहीं मारा. मेरे फादर ने ना में कभी गाली निकाली है, मेरे फादर ने ना में कभी मारा है. माई मॉम ऑफ कोर्स, मतलब हम तो 2 लड़के आप वो तो casual, हाँ मतलब, बट ऐसा नहीं है कि लाइक ओ मतलब पीटेगी माँ तो मारेगी. हुआ है कभी, एक आध बार चप्पलें भी उड़ी हैं, एक आध बार थप्पड़ भी पड़े हैं, बट इट्स नॉट लाइक आई डोंट हैव अ कोर मेमोरी ऑफ मी गेटिंग बीटन अप by my parents. So that's one thing. My parents were pretty cool when I finished my 12th and my dad is asking me, and I was a science student, and he said okay तो वो क्या करना है. oh उससे पहले shit, I shouldn't say that story, that's very controversial. Are we going to ask? नहीं oh नहीं, cut छोड़ to, दे, forget छोड़ दे. checkpoint. Okay, so दूसरी story is like when I finished my 12th standard and I was at home and waiting for the results. So अब होता है ना क्या करना है बेटा आगे. And I'm from this city called Kota, which is literally at that point in time and still I think till date was the place जहाँ से सबसे ज़्यादा IITians crack करते थे, IITs. Wow. क्योंकि वहाँ पे coaching centers were on a rise. Okay, so everyone around us is just coaching for IIT only.
सो माई डैड के फ्रेंड्स यूज टू कम टू माई डैड एंड से इसको 1 साल ड्रॉप करो, उसको IIT करना चाहिए. माई डैड इज लाइक सब लोग थोड़ी कर लेंगे IIT. 5,000 तो सीटें हैं, लाखों बच्चे हैं, उसको नहीं करना. लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू. This is what my dad said when I was like, मुझे क्रिकेट टीम में होना है इंडिया की. हाँ, and then- 11 ही होते हैं ना. तो कौन सा हो जाएगा? हर कोई सचिन थोड़ी बन जाता है. So my dad said, do whatever you want to do. But in the meanwhile, till the time you figure, why don't you give this engineering a try? तू एग्जाम तो दे दे, और एग्जाम दे ही रहा है तो ट्यूशन ले ले 2 महीने 3 महीने. It's like तू कर. और मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, पहले दिन 2-4 दिन गया, उसके बाद आई रियलाइज एक क्लास में 150 बच्चे हैं, 150 kids in one class. I literally, because I am always late, I told you I am always rushing, I used to sit outside the class. Literally पूरी क्लास भरी हुई है, पीछे क्लास में तो रहा, दरवाजे के बाहर मेरी सीट है. सुनाई देता है? सुनाई देता है कि वो माइक वाइक पहन के करते हैं. Oh, wow. क्योंकि Sorry, auditorium में टेक्नोलॉजी. बट मेरे को व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को देखने के लिए आई यूज्ड टू गो लाइक दिस. Otherwise I can't see because I'm sitting literally outside. First 2-3 days I went like religiously एकदम diligent. Then I realized 8 घंटा कौन पढ़ाई करेगा यार, अभी तो स्कूल खत्म किया यार, यहाँ पे भी. I told my dad I can't go. Dad said okay, go as much as you can. So I would leave from my house, attend a few classes, then I'll leave from there, go to my friend's house, chill, cricket खेला, मस्ती करी, and my parents would know that I'm not in the class. And one day another friend of mine, उसके parents हमारे घर आ गए. को आपको नाम नहीं लेना चाहिए. आपको पता है हमारा बेटा कहाँ है. हम कोचिंग सेंटर गए थे, उसकी बाइक वहाँ खड़ी है, हम अंदर गए, वो था नहीं. तो मेरी माँ ने बोला वो एक फ्रेंड का नाम लिया, उसके घर पे होगा. वो वहाँ क्यों होगा, हमारा बेटा वही है. तो आपका बेटा क्लास में क्यों नहीं है. तो माय मॉम इज लाइक क्योंकि उसको नहीं पढ़ना है, वो थक गया, कितना पढ़ेगा. एंड दे वर लिटरली सो शॉक्ड, हाउ कैन यू अलाउ योर किड्स टू बी लाइक दैट. And my parents were like, not everyone can, manage this kind of pressure. Your And it's parents were fine. advanced, like from. I don't know, man. They were pretty cool. And they were like, okay, fine, जो करना है करो. तो फिर मैंने इंजीनियरिंग कर ली. Nice. क्योंकि they are so cool, yeah. They are so cool that they're like कोई pressure. Then you as a kid, ना you don't feel the pressure कि अच्छा मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं. Yeah. But eventually, I think यही उनका प्लान था. कि इसको They look like they played you so well. आज तक नहीं पता मेरे को. I was When played. you're saying it only, I feel like they set you up well, bro. Yeah. But I'm happy. Like I. Fair. Checkpoint, last segment है. Yes, sir. ठीक है. Last one, I have to go pick up my Puppy. What? He has to go pick up his puppy, bro. Yeah, To my the puppy's vet. gone to the vet. Okay, you have to go and pick. क्या नाम है? Rani. Bro, I. I have 2 dogs. One is Rani, one is Sundari. अरे यार, Sundari is also my nickname by the way. क्या? सही में? Sunny Oh, Sundari. that's another story. So when I was born, I'm the second kid. Okay, I have an elder brother. हाँ. So when my parents were expecting me, they were like, अब एक बेटा तो हुई गया है, एक बेटी अगर हो जाए तो कितना अच्छा हो. Yeah. And my mom Those was are the like, spoiled ones, bro. जिसका पहले लड़का तो हो गया. बेटी होनी चाहिए, बेटी होनी चाहिए, बेटी होनी चाहिए, और मैं आ गया. तो मेरी माँ इतनी अपसेट कि यार हमें तो बेटी चाहिए थी. एंड मैं पैदा भी बड़ा खूबसूरत हुआ था, गोरा चिट्टा एकदम ऐसा. तो मेरी माँ क्या करती थी, मेरे को फ्रॉक पहनाती थी बचपन में, और मेरे 2 चोटियाँ बनाती थी. Nice. और मेरे को कड़े पहना देती थी, और मेरे को सुंदरी बोलती थी. तो मेरी फैमिली में भी बहुत सारी ऐसी मेरी बुआएं हैं, माई मासीज आर देयर, दे टिल डेट कॉल मी सुंदरी. एंड देन इन 5th standard, sir, 5th standard, there was a fancy dress competition. Don't tell me, don't tell me. My brother became a sardar, and my mom dressed me as a sikhni. Wow. So I'm wearing a suit. Okay, I'm wearing full paranda. Wow. And I have no shame to do all of that. मैंने एक बार माँ को नहीं बोला मत बनाओ. और ऐसा भी नहीं कि I was swinging both ways. No. I was still like a straight as an arrow. Okay. But it's fancy dress, no. Yeah. And I You wanted were to playing have the fun. character. I played the character. He was playing the character. Character. Listen to this. हाँ यहाँ तो illegal भी है ना cross dressing. वही इसलिए बोल रहा हूँ. But मैं 5 साल बाद I was in grade 5. And I'm full ready, हाँ, makeup, lipstick, काजल, वाजल, मेरी माँ ने. I'll try and find out that Dude, picture. that'd be so cool if I'll you give can it to you. I'll give it to you. My mom would have that picture. So I'm full ready, हाँ, in paranda varanda. And then my mom realized, अरे earrings तो है ही नहीं. और कान थोड़ी छिदे हुए थे उस समय मेरे, तो मैंने बाद में कॉलेज में छिदवाए. ये अभी करवाया है. Cool बनना था मेरे को कॉलेज में. Oh shit, we forgot it. आहान एक पांडे. segment थी यार. भूल गया मैं. करेंगे. अब क्या है कि अब मेरी माँ ने, मेरे चाचा की कॉस्मेटिक्स की शॉप है, तो मेरी माँ चाचा की दुकान पे ले गई, बोला इसके लिए ना क्लिप ऑन वाले इयररिंग्स दे दो. सो मैं वहाँ खड़ा हूँ फुल रेडी परांदे के साथ. चाचा की दुकान पे एक आंटी आई,
वो आंटी मेरे सर पे हाथ रख के कहती बड़ा अच्छा सजाया आपने अपनी बेटी को। मैं घूम के कहता हूँ अरे मैं लड़का हूँ। सो या 10 सुंदरी सुंदरी एके सनी एके वरुण एके क्या क्या हो रहा है ब्रो यहाँ पे। चेक पॉइंट. ओके, कमिंग अप टू द segment which I was going to talk about. It is, let me pull it out. Don't think that came out wrong. Yeah, Let me pull it out. that's what she said. Okay, so the segment is called wrong answers only. अरे ठीक वाह। है, very easy. हाँ, ठीक है, बोलो। some question like what is the national animal of India? Okay, elephant. क्यों? Wrong answers बोला ना तूने? अच्छा, okay, but it should give me a reason also ना why elephant ऐसे ही बोल अरे दिया, like, देखो what क्या the fuck? एकदम ऐसा हट्टा कट्टा स्ट्रॉन्ग बड़ा I है। thought it would be a cow, to be honest. हाँ। तो हर जगह दिखती है ना, गाय माता भी है. Why the f isn't it like? एक गाय और अगर तूने एक लाइन में यूज कर लिया ना, प्लीज पोस्ट दिस एज अ रील, इतना तू वायरल हो जाएगा ओवरनाइट। ये मेरी गारंटी है। उस चीज के लिए नहीं होना bro. I have criteria. There is no beef between guy. Yes. Which is the religion that promotes no fighting, non-violence. There is no religion There as is, such. bro. There is? Yeah. Which Wanna is? know? Yeah. Hinduism. Ask me why. Why? Because no beef, motherfucker. This should be a reel. Okay, fine. Okay. Dude, I lost it, man. Gum gaya mera. Chicken Acha. left the chat. Okay. Checkpoint. Okay. What is the Indian way of curing a headache? घर पे home remedy. हल्दी दूध. दूध हल्दी तो सुहागरात में नहीं देते। हल्दी दूध was cure to everything, bro. I got a cut on my head and they were like हल्दी दूध. हल्दी दूध दे दो यार। Like, like, मुझे कैंसर है, इसको हल्दी दूध पिलाओ। रौनक से मेरी माँ का मुंह बंद कर दो बस. हाँ, बीवी को खुश रखो, हेडेक ठीक हो जाएगा। That's the. Now I'm getting you on the line of these wrong answers. Do you get it? Okay, I'm okay. setting you up. सोच इस वे में ही सोच में. Okay, Okay. 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 डर क्यों What लग रहा does है? बेटा settle हो जाओ actually mean? अच्छा, रॉन्ग आंसर देना है। ऐसे वाला answer है देखो, भटके. it's time to. बेटा settle हो जाओ. बेसिकली Have sex. Legally have sex. So you know when you get married and 1-2 साल हो जाते हैं, उसके बाद the family is pressurizing you, बेटा मतलब अभी दादा दादी बन. So basically your parents are telling you to have sex. Isn't that's it so like cool, right? isn't it concerning? Is it? Have your parents ever asked you to have sex? Ronak once found. Are you married? No, right? If your parents come up to you and ask you, please have sex, what would you feel? बचपन में they would be like कभी नहीं करना, these all bad things. And अच्छा। when you grow up, they're like कर. How do you know it? How do you know how to do? बचपन में कह रहे कभी नहीं करना, तो मैं कैसे आया? आपने क्यों किया? गंदी बातें हुई थी और Yeah, यार. gandhi, and then they expect you to be pro at it. You know, the minute you get married, they're like. अब तो बताया हमें कुछ नहीं है, and suddenly बेटा थोड़ा दादा दादी बना दो, बेटा मुझे एक और पीढ़ी ऊपर जाना है. दादा दादी बना दो, एंड वी आर लाइक आप घर से बाहर जाओगे तो कुछ होगा यहाँ पे। पूरे दिन तो सर पे बैठे। Okay, check point. What is the Indian? अरे word- रेमेडी तो बता तू। मैं नहीं बता रही अरे हूँ. यार बताओ। Okay. What is the Indian version of therapy? एक चपेट पड़ेगी ना, सब ठीक हो जाएगा। Okay. Oh, that's the right answer यार। एक तो screw like ढीले screw and slap man. और वो सब tight हो गए. bro. Tight slap and everything is gonna fall in place. Okay, last one. What is the real role of a family group, like a Indian family group? Yeah, what is the role of it in one's life? To ask one question, just one question. Job क्या करते हो बेटा? For me to explain, I joined radio industry in 2006. The official designation used to be a radio jockey when I was getting married, and I have a love marriage. So my mother-in-law had to convince the entire family that this is the guy I want to get my daughter married to. लड़का क्या करता है? रेडियो जॉकी है. अच्छा जोक सुनाता होगा रेडियो पे. My mother-in-law is like नहीं रेडियो जॉकी क्या करता है? तो मेरी मदर-in-law उनको बोलती थी वैसे वो इंजीनियर है तो रेडियो ठीक करता है. अच्छा. Oh my God. You have no idea how difficult it was to convince people that it is a real job. It is a real job. Or ultimately I had to just give in
and tell them, by the way, I'm an engineer. Otherwise, they would be like, तो रेडियो जॉक तो करते क्या हो? Till date लोग मुझसे ये पूछते हैं ना, अच्छा तुम्हारा शो तो सुबह 6 से 10 होता है, उसके बाद फ्री? Bro, I swear, before I spoke to any radio jockeys, मेरे को भी यही लगता था. 10 बजे फ्री? 4 घंटे का शो है ना, उसके बाद तो बस पार्टी कर रहे हो. और 4 घंटे की बात ही तो करनी है यार. वो काम में भी और भी ऐसे ही लोग हैं जो बात करते रहते फुल टाइम. करो बन जाओ भाई. Well, that's crazy, bro. Actually, that's the checkpoint, and that's the end of all of our segments that we had planned. Great conversation, man. I had so much fun. I literally came into this conversation thinking पता नहीं क्या ही होगा. हाँ. But मुझे लगता है कि इसका podcast का नाम change कर देते हैं हम लोग. है ना? We should call it like just another podcast. Yes, true, or yet another podcast. Yet Yap. another. We were just yapping, and it was such a free flowing conversation. Nothing too hardcore. So it's Sometimes you were getting deeper, and then I had to like, भाई आजा बाहर हाँ, थोड़ा. खींच लिया तूने मेरे को, बचा लिया. मैं भी जा रहा था ना इसलिए. हाँ. You would have come out and I would have stayed there, bro. That's why I say checkpoint. Yeah. and put it. Thank you, man. Great Thank you so much, bro. Thank you. We had such a lovely time. And that was check. Don't do it. Point. Yes. Always away from the main point.